मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रोडक्टिविटी टूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी टूल्स, इट टॉक्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो टूल्स है उसके बारे में। बट इसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ऑल्सो यूज दीज एप्लीकेशंस फ्री, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तो संदर साहब, आपको भी आवाज आ रही है? जमन, कैन यू ऑल्सो हियर मी? So, friends, good morning. Thank you for joining in. What I am doing is I'm recording this session for everyone to take the benefit of it. So, this is also getting recorded, and I'll be sharing this with all of us in the uh, group. Okay. Now, let me talk about what exactly are we going to talk about in productivity. So when we, Santa, you understand Hindi also, right? Do you? Yeah. Okay. Okay. All right. No problem. So see what I am showing you right now. That's the productivity tool called as Microsoft To Do. Yeah. So this session is today going to be based on 3 to 4 tools. One is Microsoft To Do. The other one is Microsoft uh, OneNote, as well as Microsoft Office Lens. Yeah. And since this is a productivity workshop, here we are going to talk about what are the best practices or better ways of working in daily life. Yeah. Now, as you can see on the screen, I have this Microsoft To Do. The app is available in Microsoft Play Store, sorry, Microsoft Market, or you can download it from Play Store or iOS App Store. What exactly is the benefit of this app? As you can see on the screen, I have this to do app and I use it regularly. Whenever I have to do certain tasks, as you can see, today is 23rd April, and my day, I already have these tasks available. Do you all see this? Yeah. So I have made my sure that I documented these things today to call these people. But one of these tasks was supposed to be done on Monday, 18th April, but I couldn't do it. So I still have added it. So what exactly is this My Day concept? Let us understand this My Day concept. In this My Day, every day this is going to be completely blank. I repeat, this is going to be completely blank. And what you need to do is you just have to either type your activities. Let's say I type my activity here, conduct productivity workshop for BNI friends. Okay. And I press enter. When I press enter, see, this automatically got added here. All right. So this is going to be completely blank every day. I've got now almost 8 activities, right? Now, if I do not complete any of these activities, right? If I do not complete any of these activities or part of these activities, then what will happen? This will automatically be moved into tasks here. Okay. And tomorrow I'll get this completely blank again. I repeat, tomorrow this is going to be completely blank again. Now, here, if you talk about this one, why is it going to be completely blank? Because Microsoft says whatever tasks that you have scheduled for today, you must complete it. Okay. So how do you complete it? See, if this task is complete, then I'll simply check this box that says complete, and it goes to completed category. Do you all see this has gone to completed category? I have other activities which are pending. If I do not click on them, it will be there on my screen. Now, if I talk about just 1 second, I'm getting a call. Just 1 second. Hello. Yeah. Yeah. Sorry about this. What I was talking about was yeah, yeah. No, no, no. I was on mute, Santa. Okay. Uh, so here, when we talk about this one, the moment I clicked on complete, it got completed. ठीक है? जो बच जाते हैं, whatever activities which I have not marked as complete today,
goes into tasks category. So see, these are all the tasks that I have planned someday, but I've not been able to complete it, right? So if at all any of these activities which I want to complete it today, I can go back to my day, go to this suggestions option, and see I can select certain activities. Uh, See here, I go to this one, and whatever activity recently added, whatever activities that I feel should be added, so I can click on this plus sign to get them added, right? Now create brochure, let's say I want to do all these things, I can just get them added like this, right? So this is I want to mail to this guy. So this way I plan all my activities and keep a track of it. Why is it important? See, let's say I am traveling in a train, or I am on the flight, and all of a sudden I remember that I need to do one task. It is a good practice to go ahead and document that on your mobile on this, right? You can also type it like this, right? Call Santa tomorrow at 8 a.m. Right? So automatically, do you see when I wrote call Santa tomorrow 8 a.m., automatically it says remind me at 8 a.m. tomorrow. Getting it? Yeah. So this is the automatic task, and it has marked that in my tasks. Right? Now, when you see this task, it will automatically give you notification tomorrow at 8 o'clock. And I didn't have to type anything. I just typed tomorrow at 8 a.m. Right now, here, if you look at this important task, if any of these tasks are important, let's say calling Santa is an important activity, so I go ahead and mark it. Now, send complete pamphlet for promotion. This is also an important activity, and call Nikhil for migration. So all these things are nothing but important activities. So they come at the top, and I can also find them in a separate list called as important list. Getting it? So from my day, it is available in my day as well as it is there in the automatic list. Okay. Now, uh, okay. Welcome, Subhash. Pradeep. Subhash, can you hear Thanks, us? Pradeep. Yeah. Yeah, Pradeep, I So, can hear you. yeah. Subhash, we have already started, and let me tell you that we are talking about Microsoft To Do. This is an app which is available on Okay. Microsoft Play Store. Yeah. Hi, Jomon. Morning. Yep. Yeah. Okay. Morning. Morning. Yeah. So we'll continue. Yeah. So here, if you talk about, I was talking about, Subhash, just a recap for you. I was talking about this to-do list, and every day you can have this list on mobile, and every day you need to open this so that you can list all the activities that you're going to do. Yeah. So my day का concept ऐसा होता है कि every day this is going to be a completely blank screen, and you will have to write down the tasks for that day. When you write down the tasks for that day, the complete list is in front of you, and जो भी activity आपकी complete हो जाती है, जैसे let's take an example, I have written call Santa tomorrow at 8 a.m. तो जैसे मैं उसको check करता हूँ, automatically वो completed section में move हो जाता है. And if I want to review all the completed activities, I can come here and see these are the activities that I've been doing. Yeah. So as you can see, all these activities are available on the screen, and I have been using it regularly. Now, coming to my day, if at all I think any of these activities are important, let's say this call Bangalore Usher for meeting. This is important. I can check them, and it goes into the meeting section. Now, here, completed section and meeting section, you guys must have understood. Now, here comes to flagged email. I'm not covering some of the part of it because those are restricted to Microsoft 365 feature. Now, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे कोई email आया है, let's take an example in Outlook, right? Now, this feature completely interacts with your Outlook, a Microsoft 365 Outlook.
इसके लिए आपका सेम अकाउंट होना जरूरी है जो आपने मोबाइल पे किया है, वही अकाउंट यू नीड टू यूज इट इन आउटलुक. So let's take an example. This reach shop का मुझे एक मेल आया है and I would like to mark it as important. Okay, so I will mark it as follow up. तो जैसे मैंने उसको फ्लैग में किया, you will see that reach shop का एक email यहाँ पे अभी it is yet to sync, but as soon as it gets synced, you will see that email here. See advanced renewal. Automatically you got it. So today, if I receive an email which is important and I would like to mark it in my in my task list, I can simply flag it. Now, see when it has come into flag list, I can directly move it to my day. See, my day का shortcut होता है. I can easily do it by using Control T. T for tiger. Do you see the shortcut? I can add it to my day. When I add it to my day, it has come in my day and see advanced renewal का एक मेल मैसेज यहाँ पे आ गया. Now here आप देखोगे कि सारे के सारे टास्क यहाँ पे होते हैं and then you can create list. Let's say this is my intern and whenever I want to assign a task to her, what do? I have created a list. How can you create a list? You can do right click here, create a new list, right? And I've created a list. Shraddha, she is my intern, she works with me. Whenever I have to assign a task to her, what do? Here I just assign a task like please complete the report today by 3 p.m., right? So see, automatically this has come, remind me at 3 p.m. today. So it automatically comes here. And let's say if I want to make it a recurring task, that means every Saturday 3 p.m. she should complete a report. Okay, so I can simply click on this recurring option and I can make it daily, weekly, sorry, weekdays, weekly, monthly, yearly, or custom. So let's say I want to make it weekly. All right, so every week on Saturday by 3 p.m., I'm going to get a reminder. Right? I repeat, every Saturday by 3 p.m., I'm going to get a reminder because this is a recurring task. So what did I do for to manage my team? Now, if I want to assign a task to someone, I do right click, create a new list, right? So I create a new list, let's say BNI, right? Now, what if I want to share it with Shraddha? Because see, this is still with me. This list is still with me. My another person or intern doesn't have access to it. Similarly, if I want to give access to this list to, let's say, Anurag, so what I'm going to do, I click here, I created a new list and I click on the share list. The moment I click on share list, it is going to create an invitation link. This invitation link that I have now, I can share it with Anurag on either email or chat or any other way. Okay, so this way I can share the list with any person and both of us can assign tasks to each other. Let's say I want to assign tasks to Anurag and Anurag assigns some tasks to me. Subhash, you have any question? Uh, So yeah, Pradeep. हाँ. So the number of employees that you have, हम्म. those can be added over here, like in the हाँ, team. मतलब मैं इसको थोड़ा सा और अगर ओपन बताऊं तो मैं अभी वो टॉपिक पे आज नहीं जाऊंगा. बट व्हेन यू टॉक हाँ. अबाउट Microsoft 365, देयर इज आल्सो टूल कॉल्ड एज प्लानर. बट वो Microsoft 365 के पेड प्लान में आता है, राइट? Okay. उसके लिए वो उसमें आप अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं यहाँ बट उसमें एक कैच ये होता है कि जो भी आप प्लानर में टास्क असाइन करते हैं, लेट्स से दिस इज द प्लानर. आई एम नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट राइट नाउ, बट व्हेन आई कम टू योर ऑफिस दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस इन कंप्लीट डिटेल. तो प्लानर में यहाँ पे आप एक प्लान बना सकते हैं कोई भी कस्टमर के लिए एंड यू कैन शेयर द क्रिएट द एंटायर प्लानिंग एंड शेयर इट विद योर टीम मेंबर्स. बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 1-to-1 टास्क है. 1-to-1 टास्क मतलब मुझे अगर श्रद्धा जैसे मेरी कलीग है, अगर मुझे इसके साथ कोई टास्क शेयर करना है एंड आई वांट हर ओनली टू बी द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर दैट, तो मैं लिस्ट बनाऊंगा. ठीक है, अगर मुझे ये भी हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ऐड करूं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज ठीक है, Pradeep. सम That's all. Yeah. Yeah. So this is a complete task management activity. I can create as many lists as I want. This completely syncs with my Outlook. This completely works with me
ऑन माय मोबाइल और टैबलेट, जहां पे भी मैं चाहूं इसको यूज कर सकता हूं. सो इट्स कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे असाइन टू मी और प्लान्ड, ये दोनों पे टैब मैंने नहीं किया है. असाइन टू मी मतलब ये देखिए टास्क असाइनमेंट आउटलुक का जो होता है, विच आई हैव टू गेट इनटू आउटलुक, सो आई एम नॉट कवरिंग दिस पार्ट राइट नाउ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. और प्लान मतलब ये डायरेक्टली प्लानर से आता है, जो प्लानर मैंने आपको बताया, और इन दोनों के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 होना जरूरी है. ठीक है. सो सिंस आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, बट this application is a must for any business user on their mobile. ठीक है. Now what next? Now after this what I'm going to talk about is ये planner, sorry, ये to do के बाद next जो tool था which is equally important, right? So I'm going to share that with you on my desktop. See, uh, when I go to, again, this OneNote is a free application. You don't need to uh, make any payment for that. तो दोनों जो एप्लीकेशन के बारे में मैंने अभी तक बात किया है, either to do और planner, both are completely free. You don't have to make any payment to use those applications. So when I talk about this OneNote, see what exactly happens with this OneNote. ठीक है. I can create a new notebook. What exactly, first of all, let me tell you what exactly is OneNote application. See, हम लोग ने टास्क तो लिख लिए, बट कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ टास्क के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए. करेक्ट. I have written a task, but I need to write something in detail. Or it could be as simple as attending a meeting and writing the details from your customer, what exactly are their requirements. Correct? तो सबसे पहले अगर मैं नोटबुक के बारे में बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे कोई भी नोटबुक बना सकता हूं. जैसे मैं अभी बनाता हूं BNI, राइट. BNI 1-to-1. ठीक है. अब ये BNI 1-to-1 क्या होगा, जब भी मैं किसी से मिलूंगा, मैं 1-to-1 रिकॉर्ड करूंगा. रिकॉर्ड मतलब, अभी अगर मान लीजिए आई वांट टू क्रिएट अ प्रैक्टिस कि मैं अगर सुभाष से मिल रहा हूं, तो सुभाष से मिलने के बाद जो भी मेरा डिस्कशन होगा, आई एम गोना राइट इट ओवर हियर. राइट. तो यहाँ पे अभी 1-to-1 मैंने एक नोटबुक बनाया. नोटबुक में सेक्शंस होते हैं. आप लोगों ने प्लानर वगैरह देखा होगा, राइट. मैं आपको एक मिनट, जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, प्लानर का पिक्चर दिखाता हूं. ठीक है. देखिए इस तरीके का प्लानर होता है. इसमें आपको सेक्शंस रहते हैं. एक मिनट. प्लानर विद सेक्शंस, या. सो I mean, yeah, see, this is the one. So you must have noticed different color sections that we have in planner. The idea is exactly the same. So एक नोटबुक है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं, एंड एवरी सेक्शन हैज पेजेस इन इट. राइट. आई रिपीट, एक नोटबुक है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है, और हर एक सेक्शन में कुछ पेजेस होते हैं. राइट. सिमिलर टू दैट you can see this image as well. So this is the planner. नाउ ये प्लानर, इसको प्लानर बोलते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में इसको वन नोट बोलते हैं. राइट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इट आस्किंग मी फॉर, कि मैंने एक नोटबुक तो बनाया, बट उसमें सेक्शन नहीं बनाए. ठीक है. तो मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट सर्विसेज डालता हूं. सो कॉर्पोरेट सर्विसेज में क्या होगा, जो भी मेरे मेरे पावर टीम के बंदे आएंगे, उनके साथ मैं जो भी 1-to-1 करूंगा, वो 1-to-1 के बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा. नाउ लेट्स से आई डू 1-to-1 विद जॉमन. 1-to-1 विद जॉमन, राइट. आई हैव रिटन इट. नाउ मैं प्लानर में क्यों करूं, वन नोट में, मतलब वन नोट में क्यों करूं, मैं अपने प्लानर या अपने फिजिकल नोटबुक में नहीं कर सकता हूं. नाउ लेट मी गिव यू द क्लियर आंसर टू दैट. मेरे पास इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है. सो आई जस्ट शो यू समथिंग व्हिच यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. अब देखिए, मैं यहाँ पे मैंने मैंने जो आपको बोला कि मैं जो भी मीटिंग्स करता हूं, तो लास्ट मीटिंग मैंने TIB मतलब अपने नितिन काशिद के साथ किया था. तो उनके साथ जो जो मुझे डिस्कशन हुआ था, आई हैव रिटन इट डाउन. ठीक है. अभी मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस दिख रहा है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक प्रोग्राम है, जो मैंने 2017 में अटेंड किया था. डू यू ऑल सी दिस. 2017 का 2022 है, मेरे पास आज भी उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है. अनुराग, क्वेश्चन है आपको?
हाँ आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद मैं पूछूं। अच्छा ठीक है। तो 2017 के नोट्स मेरे पास अभी भी है। एक और चीज दिखाता हूँ। एक मैंने रोटी करके, अच्छा रोटी कर नहीं है, एमबीटीआई करके एक सेशन अटेंड किया था। देखिए ये एमबीटीआई तो उससे भी पुराना है, 2015 करके नोट्स मेरे पास आज भी है, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आई हैव एक्सेस टू दीज नोट्स एंड एवरीथिंग ऑन मोबाइल एज वेल। तो मैं इसको मोबाइल में बहुत ही इजीली मैनेज कर सकता हूं। मैं थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल भी कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू वर्क विथ मोबाइल एज वेल। तो आप अपना मोबाइल पे भी ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने माइंड मैप ट्रेनिंग 2016 में अटेंड किया था, हाउ टू क्रिएट अ माइंड मैप। सो डू यू ऑल सी, दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क विद वन नोट। तो मैं वापस से वन नोट ऐप में जाता हूं। यहाँ पे मैंने अगर जो भी नोट किया है वहां पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। 1 to 1 with Jomon, discussion about his factory and all those things, whatever important thing that they say। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे आप डांस कार्ड भी डाल दो उस बंदे का। डांस कार्ड के साथ हम लोगों की मीटिंग होती है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डायरेक्टली गेट द डांस कार्ड एंड गेट इट एडेड ओवर हियर। तो कभी भी अगर मैं कभी भूल गया, मैं किसी क्रॉस चैप्टर बंदे से 1 to 1 करता हूँ, तो उसका डांस कार्ड यहाँ पे डाल दूंगा, तो आई विल हैव द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन। एंड वेन एवर आई गो आई कैन रीड इट, एंड मुझे कभी भी कुछ रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं उससे बात कर सकता हूँ या उसको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो आई विल हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन। सो अनुराग आप भी पूछ सकते हैं, आप क्या क्वेश्चन है? सर कि अगर जैसे हम लोग किसी से इंटरेक्ट करते हैं, सो हाँ। उसमें बहुत सारी बातें होती है, पिक्चर्स भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी वीडियोस भी होते हैं। तो क्या हम लोग हम्म। वीडियोस और ऑडियो भी तो उसमें कुछ डाल सकते हैं क्या? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, इसमें ऑडियो और वीडियो भी डाल सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ इसमें हाउ डू वी वर्क विद ऑडियो एंड वीडियो। तो अगर आपने ऑडियो एंड वीडियो के बारे में बात किया है, तो लेट मी टॉक अबाउट दिस माइक एंड सी एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हिंदी भी है और इंग्लिश इंडिया भी है। लेट्स से आई चूज इंग्लिश इंडिया, और मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन डिक्टेट। Now you will be amazed to see that whatever I'm speaking is getting typed. Full stop. Instead of typed, it said typed, but it's okay. थोड़ा बहुत little bit mistakes are here and there is okay, right? So Yeah. what we So will speak that will show on that, sorry. जो भी हमारा कन्वर्सेशन होगा that will be typed in that segment. Full stop. Hold on. Now see, what I'm talking about here is, let's take an example. You don't want to type a lot of things, but what you want to do is you want to just read it out so that it automatically can type. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं क्या बोलता हूं, अगर देखिए मैं अगर हिंदी में बात करूंगा ना, तो ये थोड़ा अर्थ का अनर्थ होता है कभी कभी। अच्छा नहीं नहीं, अभी ठीक से आ रहा है। बट देखिए क्या मतलब है कि मैंने कुछ भी मुझे पढ़ना है और पढ़ के वो टाइप हो जाना चाहिए, टाइप करने में टाइम लगता है, तो आई कैन यूज दिस वेरी इजीली। गॉट इट? नाउ अभी आई जस्ट स्टॉप इट एंड आई टॉक अबाउट कि पिक्चर्स के साथ कैसे करते हैं, सर राइट? एक बार रिपीट करके बताएंगे कि क्या? एक्चुअली मुझे दिखा नहीं कहाँ पे आपने गए थे। ये देखिए, ये मैं होम में हूं। होम में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, देख रहे हैं होम सर में? नहीं सर। हाँ, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं? हाँ 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 बराबर, ये सर्कलिंग जो है। हाँ, ये सो जो वहां सर्कलिंग पे आ हम रहा है ना, लोग ये माइक का ऑप्शन है। ओके ओके। ठीक है, फिर तो उसमें से उससे हम लोग फायदा, इम्पोर्टेंट अपना जो भी चीजें चीजें हो सकता है बाद में निकाल के हम लोग कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मुझे आपने एक बुक दिया, उसमें से एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लगा मुझे, अब उतना टाइप कौन करे? तो मैंने यहाँ हाँ पे सिंपली कर लिया। समझ रहा है? यस यस। सो दैट इज द वे आई कैन इजीली वर्क विथ वन नोट।
अभी आपने बोला कि पिक्चर के बारे में, राइट? तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको एक चीज बताता हूं जिसमें क्या होता है कि हाउ टू क्लिक पिक्चर्स, राइट? सो लेट मी शेयर माय मोबाइल आल्सो. यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय मोबाइल स्क्रीन. एक सेकेंड ना, मैं खाली मोबाइल का स्क्रीन प्रोजेक्ट कर दूं. ओके, सी हियर, यहाँ पे आप देखोगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन नोट. ठीक है, ये वन नोट आपने देखा, ये एप्लीकेशन मैंने, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये ब्राउजर कैसे ओपन हो रहा है? सी, here is OneNote application. I am opening it. Here is all notebooks that I have access to. अभी अभी मैंने BNI का एक नोटबुक बनाया है, तो let me search for that notebook also. Here you can see more notebooks. I'm clicking on that, and it is going to get me all the notebooks. Close. Okay, so एक मिनट, ये मेरा फोन, ये कभी कभी कनेक्शन ऐप में ना वो फोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है. हाँ, ये डेटा क्या क्लाउड में जाता है कि मोबाइल के डेटा पे स्टोर होते हैं? नहीं नहीं, ये पूरा क्लाउड में रहता है, और वही उसका फायदा है कि मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ ना, वो हाँ, सारी चीजें सिंक होती है, राइट? ओके ओके सिंक होती है, मेरे मोबाइल में आता है, और मोबाइल के साथ साथ आप अपने बाकी सब डिवाइसेस में, मान लीजिए मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप से, मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है? तो मैं लैपटॉप में, मतलब डेस्कटॉप में जो भी चेंजेस करता हूँ वो लैपटॉप में अपने आप आ जाता है. फिर लैपटॉप से अगर मान लीजिए मोबाइल में भी चाहिए तो मोबाइल में भी आता है, टैबलेट में होना चाहिए तो टैबलेट में भी आता है. सो दिस इज कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि यू डोंट हैव टू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म. आप लैपटॉप पे हो तो डेस्कटॉप पे भी काम कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी हो तो मोबाइल फोन पे भी काम कर सकते हो. सो इट्स कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली. ठीक है, आई एम सॉरी, मैं जस्ट मोबाइल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे वो रीस्टार्ट हो जाएगा आई विल कनेक्ट बैक मोबाइल वंस अगेन. ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए अनुराग, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे जरा? 8169 8169 244 244 072. 072. बाय द वे, मैं जो भी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ ना, वो सारी चीजें मोबाइल में भी एप्लीकेबल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे हमेशा अपने कस्टमर के साथ जब भी वन टू वन करूं या अपने किसी भी फ्रेंड के साथ वन टू वन करूं तो उनके साथ मोबाइल लेके बैठना पड़ेगा मुझे. दैट इज नॉट द केस, राइट? सो आइदर यू कैन एनी टाइम ओपन द मोबाइल, सॉरी लैपटॉप लेके बैठने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल भी ओपन करके बैठ सकते हो, and that will work. ठीक है, so now this is gonna take some time to connect my mobile again, but I'll come back to that. अभी जैसे मान लीजिए मैंने 816 ये जो नंबर है, ये नंबर मैंने लिखा. अब क्या हुआ, मैंने अनुराग से मैं वन टू वन कर रहा था, उन्होंने बोला इस बंदे से कनेक्ट करना, एंड आई एम गेम टू कनेक्ट विद दिस पर्सन नेक्स्ट वीक. बट क्या है कि मैं ये नंबर लिख के भूल सकता हूँ, राइट? तो व्हाट आई कैन इजीली डू नाउ इज, इसको मैं टैग कर सकता हूं. दिख रहा है आपको टैग? अब जब टैग करते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको आते हैं, राइट? जनरली हम लोग जब भी अच्छा, मेरा मोबाइल शेयर हो गया है, बट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक. तो मैंने इसको टैग करने का फायदा क्या है, मान लीजिए फोन नंबर है, तो व्हेन आई गेट दैट फोन नंबर ऑटोमेटिकली आई गेट इट हियर, राइट? ये नंबर को मैंने टैग कर दिया. अब कभी भी मुझे चाहिए तो आई विल इजीली एबल, आई कैन इजीली फाइंड दोस टैग्स, या? तो पहले मैं और दो तीन टैग करता हूं, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू लोकेट दोस टैग्स.
नाउ ये मैं टैग करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टैग्स है, जैसे टू डू, इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन, रिमेंबर फॉर लेटर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, वेबसाइट टू विजिट, critical, or movie to see, book to read. So these are general things that we generally do in everyday work, don't we? Correct? So these are the tags that we have got automatically, which is there, and it helps me to locate most of the informations, right? So आप देखोगे यहाँ पे there are various informations which are available. I have just expanded the tags section. ठीक है? तो ये काफी इंफॉर्मेटिव होता है. Now, second thing, abhi, I was talking about my mobile phone. Let me share my mobile phone here. ये तो आया था भाई. Anyways, I think there seem to be some connectivity issue. मैंने काफी देर तक इसको यूज नहीं किया, अभी वापस आएगा. See, it's coming. Okay, fantastic. Now you see here, ये मेरा OneNote एप्लीकेशन है, ठीक है? When I click on, अभी तक मैंने जो जो किया लैपटॉप पे, I'm going to show that to you on OneNote, ठीक है? OneNote and I click on more books. अब यहाँ पे देखिए, it is still retrieving. दिख रहा है आपको BNI 121? ए मैंने गलती से लिख दिया BNI 121. तो जो जो मैंने किया है अभी मेरे मोबाइल में दिखता है कि नहीं दिखता है, that I want to find out. ठीक है? So take a look here. It's just opening because I'm running simultaneously two things. One, I'm running the app to sync, and this, so it will take some time. देखिए यहाँ पे BNI 121 is gonna come. Yeah, दिखा आपको कॉर्पोरेट सर्विसेज मैंने बनाया था. कॉर्पोरेट सर्विसेज सेक्शन मैंने बनाया था, उसके साथ मैंने 121 विद जोमोन लिखा हुआ था. Now you will see it's fetching other details. Do you all see all the information that I've written here? Automatically it's mobile friendly, right? अभी देखिए क्या क्या कर सकता हूँ. I can take a picture, I can type something. देखिए मैं अभी let me say something. So what I'm doing is I'm recording the discussions on the mobile, but इसमें सबसे बड़ा problem ये है कि this is not going to convert it into text, right? It is just the recording. So whatever you and I are talking will get recorded. See, it will create a media file here, right? So now while discussing with you, I think that there are some pointers that I can do. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे bullets है. So I can type bullet, do 1-to-1 with let's say Subhash. ठीक है? तो Jomon has recommended that I should do 1-to-1 with Subhash. यहाँ पे और भी options है. I can mark this, I can link it, or I can make it bold. तो normal अपना जो होता है that is there. I can even attach a file. मान लीजिए मुझे डांस कार्ड यहाँ पे ऐड करना है. I can easily go ahead and attach that dance card from mobile. तो यहाँ पे recent में मैं जाके automatically assign कर सकता हूँ. I'm not attaching that file. Now, let's say what else can we do? Here I can share page. I'll come to that later. Now, let's say I want to add one more page. Okay, I can simply go here and add a page 1-to-1 with Santa, right? And now I can write about whatever I want to do, whatever discussion happens. Now, this is one more important thing, right? Let us say when I do 1-to-1 with Santa, I thought there is some picture or evidences that I want to take. तो यहाँ पे देखिए Microsoft 365 में एक और एप्लीकेशन आपको मिलता है which is called as Office Lens. ठीक है? Again, this is also free app. मैंने अभी तक 3 ऐप के बारे में बात किया. जो भी ऐप मैं बता रहा हूँ, everything is available free of cost. You don't have to pay a single penny to acquire them. ठीक है? So this is Office Lens. इसका फायदा क्या होता है? देखिए, मैं अभी अपने स्क्रीन का फोटो पिक्चर लेता हूँ and you will see, I'm going to take a picture and you will see कि जो भी पिक्चर मैं लूंगा
ये मेरा वन नोट है, ठीक है, कहाँ गया वन नोट, लेट मी शो यू, दिस इज वन नोट, 1-to-1 विद शांता में, मुझे वो फोटो आना चाहिए। सी दिस इज द पिक्चर, सो दिस इज माय स्क्रीन, राइट, okay, perfect. I click on it, so all of you can see it on your screens as well. What am I doing? I'm just clicking the picture with a picture of the screen, okay, so I've taken the picture and you can see कि ये जो border line है ये automatically select कर रहा है कि कितना आना चाहिए, सब नहीं आना चाहिए तो I can easily select the border, customize everything, right? So this is the picture that I've taken. I click confirm and see when I click confirm, automatically do you see the picture has come? मैं done करता हूं यहां पे, I click on done and now see, it is asking me whether do I want to save it as a picture, do I want to save it as a PDF, OneNote, OneDrive, OCR document. OCR का क्या मतलब होता है? Let us take an example. If I take a picture of a document or newspaper, right? Automatically, those pictures are going to become searchable. Correct? Now, see, what I'm going to do now is, yeah. So, do you see here OneNote data analytics? I change that, and now see, I'm going to select another notebook, another section. तो जब मैं ये कर रहा हूँ चेंज सेव लोकेशन, मुझे कहां पे सेव करना है? लेट्स से BNI 1-to-1, ओके, सॉरी, यहाँ पे अकाउंट एक ही है मेरा, लेट मी चेंज द अकाउंट फर्स्ट। अच्छा, दूसरा अकाउंट एडेड नहीं है जो मैंने BNI का बनाया था, लेट मी क्विकली ऐड इट। तो हाउ टू ऐड एन अकाउंट, you can see that as well process. I can click on sign in, I type Pradeep at techandtraining.biz. It is connecting to the cloud. So idea here is, जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे वो पिक्चर अपने आप आ गया। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे। मैंने जब ये ट्रेनिंग्स अटेंड किया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हिच इज माइंड मैप, ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट मैंने पेपर पे बनाया और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट मेरा, ये पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफेक्ट शेप में आया। सी हियर, this is the screen. When trainer was talking about mind map, I just click the picture, automatically वो उस नोट के साथ में आ जाता है, right? So this is the feature that I can automatically get using this one. Now let me show you, अभी देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रदीप्स नोटबुक, so I click here and I can select any other notebook, right? Actually this my phone actually doesn't take this much time. Two things, it is dependent on your mobile phone ka speed as well as the internet connection. So the internet connection that I'm using is a fantastic one, there's no problem, but मैं अभी screen sharing app use कर रहा हूँ and this app makes it little slow, but no worries. हाँ, दिख रहा है आपको ये BNI 1-to-1? I click on BNI 1-to-1 corporate services and I would like to put it in corporate services section. I click OK. And okay, so I click OK and now I save it. So unfortunately it won't come there, but it will come on the screen here. See, संता के साथ corporate services में एक और आएगा यहाँ पे, the moment it is done you will see one more page getting added here and I can get it on the screen. See, it's come, sorry, it's coming, yeah, it's come. दिख रहा है आपको? यही पिक्चर था, अभी मैंने आप लोगों का लिया, right? So this Yes. is the picture that automatically gets saved here. Any question, Anurag? No. Okay. तो क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे नोट्स बना सकता हूँ, वॉट एवर आई हैव डन, राइट? तो
what it does is Office Lens integrates with your OneNote very well. तो जो भी मैंने नोट्स बनाया ऑफिस लेंस ऑटोमेटिकली उसके साथ इंटीग्रेट होता है, राइट? So this Office Lens has got plenty of features. Let me show you once again what the features could be. Now, as you can see at the bottom, see here it is whiteboard, right? I can click the picture of a whiteboard. Whiteboard का मतलब जब भी आप presentation में देखते हो तो trainer whiteboard पे कुछ लिखते हैं, right? So that's the whiteboard. This is the document. I can take the picture of any document and scan it, right? uh, Other actions. Now, other actions may, this action is very important. This is nothing but uh, taking the picture. Sorry. One second. Retake. Yeah. Other actions में आप देखोगे कि यहाँ पे this is just a document scanning. This is table scanning. Now, this is very important. Let me tell you. Once I had actually gone to income tax office. कुछ क्वेरी था इनकम टैक्स ऑफिसर को अकाउंट के बारे में, सो I'd been there. So my CA was also with me. She got all the tables in print out. तो उसने बोला कि मुझे ये हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, गिव अस द सॉफ्ट कॉपी सो दैट वी कैन एनालाइज द डेटा. एंड शी सेड कि मुझे ऑफिस से बात करके मैं भिजवाती हूँ. आई सेड होल्ड ऑन. मैंने क्या किया, वो टेबल्स जो प्रिंट आउट था उसको लिया. I scanned using this table and automatically on the spot I converted those tables in printout into an Excel file, right? So ये क्या करेगा, आपका नॉर्मल एक कोई भी प्रिंट आउट है जिसमें एक्सेल के जैसा ग्रिड बना हुआ है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल एक्सेल फाइल. मान लीजिए आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है एंड यू वांट दैट टू बी रेड, राइट? सो ऑटोमेटिकली दिस इज गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन. मान लीजिए आपके पास बुक है और उसको आपको खाली सुनना है एंड यू डोंट हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट बुक, you can make that hard copy into audio book using this, right? Just आप scan कीजिए and it will read it from the screen, right? Then let's say you have got someone's visiting card and you want to save it on your mobile. What you can do is simply go to actions and it is going to save that contact on your mobile phone, right? So just picture खींचिए और automatically you can get the contact. Now this is a simple thing which is QR code. हम कई जगह पे जाते हैं and we need a QR code scanner. So this is the QR code scanner, right? So these are the actions. I can even go to business card and capture that, or I can make it a simple photograph, right? So there are multiple things that you can do using this simple app, which is nothing but your uh, uh, Office Lens, right? कई लोग इसके लिए कैम स्कैनर यूज करते हैं. Instead of cam scanner, you can use this application. A fantastic application that integrates very well with your OneNote. Yeah. The best thing is, मैं जब भी इसके बारे में बात करता हूँ, let me talk about the OneNote integration and other features that it has. So देखिए, आपने कोई भी पिक्चर लिया, लेट्स से मैं रैंडम कोई भी क्लिक करता हूँ, राइट? रैंडम मैंने आई हैव क्लिक्ड ऑन इट and the moment has been captured. Now I click on confirm. Now see here, if I want to, let's say मेरे पास कई पेजेस हैं, ठीक है? कई पेजेस का मुझे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना है, right? Generally what happens, I have seen one guy literally doing this in one of the organization which uses Microsoft 365. He used to click multiple pictures. मान लीजिए उसके पास एक 5 पेज का डॉक्यूमेंट है. He would click the picture of each page, save it as JPG, then sync his mobile, मतलब केबल लगा के वो पिक्चर ड्रैग करेगा और फिर लैपटॉप में लेके उसको पीडीएफ करेगा. Wherein this can actually help you to create a PDF. Let's say मैं दो पिक्चर ले लेता हूँ ऐसे ही. ये these are the two pictures I have taken, right? Two pictures I have taken, and now I click confirm. And after I click on confirm, do you see this red button? I click on that. That I am done. I can use filter, crop, rotate, and all those features, like generally whatever features that we have. For ink, text वगैरह ये सब चीजें कर सकते हैं. I'm not getting into basics. And I click on done. Now देखिए, I can easily create a PDF, right? I can even store that PDF in Pradeep's OneDrive or phone storage, right?
I select Pradeep's OneDrive. So here you get to see the OneDrive में automatically वो store हो जाएगा. OCR or PowerPoint, these are two Word and PowerPoint features. When you talk about OCR, as I mentioned earlier, when you take a picture of that document, it creates a Word document which is searchable. Let's say अगर मैं ये स्क्रीन का लूं और मैं गैलरी वर्ड सर्च करूं उस डॉक्यूमेंट में, जैसे वर्ड में हम लोग कंट्रोल एफ करके सर्च कर सकते हैं, तो I can use search this gallery word using that Word document. Although it's a picture, still I'll be able to search using that. Similarly, I have PowerPoint. What I can do here is I can create a PowerPoint slide also using this picture. Let's say I've created click 10 pictures and I want to create a PowerPoint presentation. Let's say मान लीजिए मैं कभी किसी पार्टी में गया, मैंने अपने दोस्तों के फोटोग्राफ खींचे, right? So I clicked all the photographs and I want to convert them. Whenever I click a photograph, I want that to get added into my PowerPoint presentation so that I can convert that into a video. So you will see that this PowerPoint and PDF that I've created, it'll create PowerPoint file as well as PDF file, right? Simple and very easy to use feature. Immersive reader, again, it is read out text from images. So any text that you have in image will be read, correct? So plenty of features are there in OneNote, To Do, and Office Lens. Okay. And before we wrap up, let me show you my to-do list here also. मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए ये मेरा to-do list है that I use it on my mobile. So whatever I have done today, if you remember, ये सारे activities थे मेरे when I created, right? Do you remember this call Santa tomorrow morning at 8 a.m.? So all these activities I have created on my laptop and I could easily get it on my mobile. Same features, everything are exactly same, right? You remember this is Chacha, Shraddha and BNI. So all these are nothing but my list that I have created. Yeah. So any questions, friends, before we wrap up today's session? Yes. हाँ अनुराग बोलिए. These three are the different apps. Yes. Or it is the same one. हाँ, तीन अलग अलग ऐप है. देखिए मैं प्ले स्टोर में जाके दिखाता हूँ, तीनों अलग अलग ऐप्स है, बट तीनों माइक्रोसॉफ्ट के ही है. ओके. ये देखिए मेरा सिर्फ एक ही डाउट तक, ये तीनों एक साथ कोलैबोरेट होते हैं कि हाउ? तीनों एक साथ कोलैबोरेट होते हैं ना. जैसे मैं देखिए कोलैबोरेशन अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट लेंस और वन नोट है, ठीक है. ये मेरा वन नोट है, इसके साथ मेरा ऑफिस लेंस कोलैबोरेट होता है, ठीक है. नाउ हाँ, इसके साथ मेरा ऑफिस लेंस कोलैबोरेट होता है. इजीली आई कैन डू इट. अब जो मैंने टू डू बताया वो एक सेपरेट ऐप है, उसका इसके साथ कोलैबोरेशन नहीं होता है. अगर आपके पास पेड ऐप है, जैसे एमएस ऑफिस आपके अगर आपने पेड है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस खरीदा है, ठीक है, उसके साथ इसका कोलैबोरेशन होता है. जैसे मेरे पास ये पेड ऐप है तो इसमें कोलैबोरेशन फीचर्स है. जैसे मैंने क्या किया, टू डू में कुछ टास्क बनाया, तो यहाँ पे मैंने कोई टास्क बनाया तो ये ऑटोमेटिकली मेरा आउटलुक में दिखाई देगा. आउटलुक के देखिए मीटिंग्स, जैसे आज मेरा मीटिंग है, मान लीजिए इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं. मैं एक काम करता हूँ, आई चेंज दिस टू BNI 1-to-1. अच्छा BNI 1-to-1 किधर गया इसमें? लेट मी ओपन दैट. सी आई कैन गो टू फाइल, ओपन. अगर मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो आई कैन इजीली गो हियर एंड ओपन माय अनओपन्ड वर्कबुक्स. यहाँ पे दिख रहा है BNI 1-to-1. I click on it and automatically that BNI 1-to-1 would open. And मान लीजिए अभी हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐड पेज करता हूँ. अभी जो मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप. तो I can click on this and automatically you will see that meeting details will get fetched here. तो इसका आउटलुक के साथ इंटीग्रेशन, टू डू का आउटलुक के साथ इंटीग्रेशन, फिर उसका वन नोट के साथ इंटीग्रेशन, मतलब तीनों है. बट आप लोग अभी कैसा है कि ये सब थोड़ा हाई लेवल की चीजें हो गई. अभी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जस्ट स्टार्ट यूजिंग दीज एप्लीकेशंस, राइट. जहां तक मैं जानता हूं जोमन के पास और सुभाष के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, so they will be able to make full utilization of these features.
बट आपके पास और शांता के पास शायद माइक्रोसॉफ्ट 365 ना हो, तो सारे फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होते। बट हाँ, ये फ्री ऐप भी है और फ्री में बहुत कुछ है। मतलब वन नोट का 80% यू कैन यूज इट फॉर फ्री। जो 20% है, जैसे आउटलुक के साथ इंटीग्रेशन, ये वाले फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके ठीक है, बाकी आपके अगर आप देखो, बाकी ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। ये ब्राउजर में जो यूज कर रहा हूँ ना, ये फ्री एप्लीकेशन है, दिस ओ इज फ्री। और ये विंडोज के साथ भी ये एप्लीकेशन फ्री में आता है। तो इफ यू हैव गॉट विंडोज, जस्ट गो टू स्टार्ट एंड सर्च फॉर वन नोट, यू विल गेट दैट एप्लीकेशन, वन नोट, एंड you will get this OneNote application. So we can Got it? download from in the laptop as well as the mobile. Yes, you can very well. So both email ID should be the same only, ना? हाँ, मतलब जिस आईडी से आपने यहाँ पे साइन इन किया है, आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी बनाना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपने आईडी बनाया, तो outlook.com या अभी outlook.com का ईमेल आईडी मिलता है, या अगर आपके पास पुराना हॉटमेल वगैरह है, तो यू कैन साइन अप यूजिंग दैट आल्सो। यू गेट 5 GB ऑफ वन ड्राइव स्पेस एज वेल एज दिस वन नोट, ऑफिस लेंस एंड टू डू एवरीथिंग, यू गेट इट फॉर फ्री। So could I जैसे हम लोग एक नया वो मेल आईडी क्रिएट करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, outlook.com में आप जा सकते हो, outlook.com, एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी। यहाँ पे वो मेरे एग्जिस्टिंग मेल ओपन कर रहा है, बट यू कैन इवन गो हेड एंड क्रिएट एनी ऑफ योर पर्सनल ईमेल आईडीज। ठीक है, जनरली आप विंडोज आजकल लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपको एक आउटलुक का आईडी क्रिएट करने के लिए बोलता है माइक्रोसॉफ्ट, और उसी के साथ आपके कॉन्फ़िगर्ड होती हैं सर्विसेज। So before we wrap up, Santa, any questions? Jamon, any questions? Subhash? No, thank you very much. Pradeep, No, one brother. question that Yeah, the lens you're Santa. talking about. So when you scan the visiting card, that will be saved as a image or it will be saved as a contact? It will be saved as a contact. Okay, let me do it right away in front of you. I have this card. Let's say I scan that card in front of you right now. Okay, so ये मेरा ऑफिस लेंस है, एंड सी एक्शंस में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस कार्ड आई सिलेक्ट एंड आई एम स्कैनिंग दिस विजिटिंग कार्ड। यू सी, ओके, नाउ सी ऑटोमेटिकली उसने वो कैप्चर किया। आई क्लिक कंफर्म and I click done, right? And see, do you see contact plus image? Pradeep's notebook contact image, right? I can save it as a PDF and I am saving it as a contact. Oh, that's good. Okay. And see, there are two options. One is it is getting saved and it is getting saved here also. And now I can add that. ये जैसे waiting for transfer complete होता है, I can now add it as a contact. So it's actually creating a contact card. It like I said, it's running little slow, but it जैसे होगा, I can add that number as a contact card on my mobile. Yeah. So and a copy of that also gets saved in your OneNote. तो कल को अगर मान लीजिए you lose all your contacts for some reason, जैसे अभी अनुराग ने मुझे बोला था कुछ दिन पहले, उनका मोबाइल फॉर्मेट हुआ, तो he lost all his contacts, right? So this way what you can do is you also save a copy of it on your OneNote notebook. पता नहीं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, but it is taking that much amount of time, but it works fantastically, trust me. मतलब अभी वो टाइम ले रहा है, but it works fantastic. ठीक है, any more questions, Santa? No, Pradeep, Thank you. Thank you Pradeep. very much. Thank you very much. Thank you everyone. Thanks, Pradeep. Thank you. Thanks, Stan.